Well, good morning, students. We are continuing with our chapter number 1, which we have to been left yesterday, Science, Class 10th. Now we have to been given you the answer of this first questions. Why does color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? Now question is saying कि आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है और आप जब उसमें आयरन नेल्स को डिप करते हैं। बच्चों, जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो स्काई ब्लू कलर होता है और ब्लू कलर का होने के कारण जैसे ही हम उसमें आयरन नेल्स डालते हैं सर्टेन टाइम के लिए तो उसका कलर जो है लाइट ग्रीन हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो है हायर रिएक्टिविटी सीरीज में आता है और हायर रिएक्टिविटी सीरीज के जितने भी मेटल्स हैं वो लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आयरन नेल्स जो हैं एक प्रकार से वो लाइट ग्रीन कलर कर देता है और डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को। नाउ आई डिस्क्राइब इन इंग्लिश व्हेन कॉपर सल्फेट नाउ आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश व्हेन you know that copper sulfate solution is of sky blue color, and when you put iron nails into it for certain time period, you would find copper sulfate solution is fade and its color is light green. Why is it so? If we go in the detail, we will find that copper sulfate solution, basically copper, iron is on high reactivity series as compared to copper. So due to this reason, since iron is higher reactivity series compared to copper, so it displays copper from copper sulfate solution, and you would find the formations of iron sulfate and which is of light green color. Let us start what reaction is going on. Now in this case, if you could see, the reaction is something like this. Something like this. Now what reaction is going on? If you can see, this reaction is when copper sulfate, now this is, we have questions. So this is on page number, if you can see, its page number is your 13. Means on 13 page this question is given in your exercise. So when you take copper sulfate solution, so copper sulfate when react with iron nails means Fe, it gives you FeSO4, and you would find copper will be removed off. So in this reaction you would find copper sulfate, which is of blue color, will be removed by the iron because iron is higher reactivity series than copper. So that's why it is displaced copper sulfate from copper. So here is iron, it is copper sulfate solution, copper sulfate, this is iron sulfate, and this is your copper. So in other words, you can say that any metals can, if it is higher reactivity place, that can be replace the low reactivity place of copper. In other words,
question number, I think so, on page number your 13, which one is given, that why does the copper sulfate solution changes when the iron nails is dipped into it? So I'll give you the answers. I think so you all are understand. Now we will continue our next question. Next question is, give an example of double displacement reactions other than the given activity number 1.10. Now if you can see in our reactivity number 1.10, we have given the example which is our sodium sulfate plus barium chloride, which gives you BaSO4 and sodium chloride. So other than this, we have one more example, that is from sodium chloride and silver nitrate. Now let us see what we had. Now next question is question number 2 on the same page. Page number is, this is your 1 and page number is 13. Page is 13. So question number 2 is, now we have to take the example of sodium chloride. I have given sodium chloride, you can write by symbol NaCl, and when react with silver nitrate AgNO3, it gives you AgCl and your NaNO3. Now here is sodium chloride, this is your silver nitrate, this is your silver chloride, and this is your sodium nitrate. Now here the other example, which is from activity number 1. You have given 1.10. This is the other example in which you have to say that double displacement reaction, as I have described you previously when I just taught you the chapter. At that time I have already given you the significance of the double displacement reactions. Now here, if you can recall, we have two types of radical. This is sodium and chloride. Sodium is your positive and chloride is your negative. Similarly, silver is your positive and nitrate is your negative. So these are basically radicals, and you have seen in this reaction, in the double displacement reactions, I have already given you this will be changes your part, that is they can replace your, here silver can be attached with the chloride and sodium can be attached with the nitrate. So you can see here the radical can be changes. In other words, you can say whenever such kind of reactions are there in which you can change your radical part, then you can say this sorts of reactions is known as double displacement reactions, because both can be changes. बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय आपको ये बातें मैंने बतलाई थी कि अगर सपोज किसी रिएक्शंस के अंदर अगर दो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट के अंदर सिल्वर जो रेडिकल है वो क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है और सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। इस प्रकार से जो चेंजेस हैं, चेंज ऑफ द रेडिकल्स अगर आपको देखने को मिले तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड जो है आप देख रहे हैं, इसमें सोडियम आयंस और ये अटैच हो जाते हैं नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर जो है क्लोराइड के साथ अटैच होकर के आपको इस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट देता है। और इस प्रकार से ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लेकिन क्योंकि आपका जो एग्जाम्पल दिया था 1.10 एक्टिविटी में
वो अलग था इससे, तो उसने यही बोला था कि क्या नाम आपको जो है इससे अलग आपको एग्जाम्पल देना। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशंस। वी विल कंटिन्यू विद पार्ट ऑफ थर्ड वन। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चंस we will see what question is telling you. Now here you have identified the substances that are oxidized and reduced. So आपको जो है नीचे दिए हुए रिएक्शंस में ये बतलाना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है आपका ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा जो है रिड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर जो है आपको एक रिएक्शंस में बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नाउ सी व्हाट इट इज टू बी गिवन। Now question number we have third. Question number third. In this question number third, you have given 4Na plus O2. First part is 4Na plus O2 gives you 2Na2O. 2Na2O. इस क्वेश्चन में उसने ये बात बोली है एलिमेंट जो है आपका ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा जो है आपका रिड्यूस हुआ है। तो आपको मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था कि जिस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो यानी सोडियम ऐड टू ऑक्सीजन गिव यू सोडियम ऑक्साइड। So means sodium when add to oxygen gives you sodium oxide. So it is oxidation reaction. लेकिन यहाँ पे सोडियम जो है ऑक्सीडाइज हुआ है और क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसने सोडियम को अटैच किया है तो ये रिड्यूस हुआ है। तो आपका आंसर हुआ कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज। Sodium is oxidized into sodium oxide. Whereas in second case, oxygen is reduced. So in this case your oxygen is reduced whereas sodium is oxidized by the definition. Now your second part is your copper oxide when react with hydrogen it gives copper plus water. Now in this reaction you also tell which is oxidized and which is to be reduced. The case number 1, as you have very well aware, copper oxide can be just converted to copper and hydrogen can be converted to when hydrogen can be attached with the oxygen. So means hydrogen attached to oxygen is oxidation reaction. So you can say hydrogen attached to oxygen is oxidation reaction. This is first part answer. And second part answer is your, since copper oxide reduced to copper, so means copper oxide can be reduced to copper. So in this case oxygen is removed off. So by the definition such reaction in which oxygen is removed off, so that reaction is your reduction. So your copper oxide reduced to copper is reduction reaction.
I write down capital words so that you can understand. This is your reduction. I'll write down reduction. Reduction reaction. So first case it is oxidation reaction, second case it is reduction reaction. बच्चों, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और वाटर को फॉर्मेशन करता है। अब इसमें आपको बताना था कि कौन सा उपचयन हुआ है और कौन सा अपचयन हुआ है। तो आप जानते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन आपका अटैच होता है उसको आप उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले केस में ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ इसको उपचयन क्रिया कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार से सेकंड केस में कॉपर ऑक्साइड जो है आपका कॉपर के अंदर कन्वर्ट हुआ, इसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया। यानी ये हिंदी वाले बच्चों के लिए कि इसमें उपचयन और अपचयन अब आपको बताना था। तो आपको मैंने पढ़ाया भी था कि जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन रिमूव्ड ऑफ हो जाती है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी आपकी परिभाषा के अनुसार ये अपचयन अभिक्रिया। और ऊपर वाले में भी मैंने आपको ये बात बता दूं कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज इनटू सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये भी उपचयन अभिक्रिया हुई, उपचयन अभिक्रिया। और क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक प्रकार से रिड्यूस हुआ तो ये अपचयन अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है आपका एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका थोड़ा सा आपके लिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी एक प्रकार से आपको 4 आंसर्स दिए हैं, उसमें से आपको एक को ढूंढना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, थर्ड क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और फोर्थ क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसको करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज का है वो क्या क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और उसको जो है फिर करते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 यानी एक्सरसाइज का। अगर सपोज आपको बच्चों ये पहले क्वेश्चंस या दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन जो भी आपको दिए हैं इनमें अगर सपोज आपको दिक्कत आती है, मेरे ख्याल से मैं आपको आप मुझको कांटेक्ट कर लें। मेरा लिंक जो है आपका वीडियो में लास्ट में दिया है। आप जो है कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे तो मुझे पूछ लें। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन नंबर 4 of exercise. So we will start in the end part of the exercise. So exercise we will start now. First 2-3 questions I'll given you for your I think so third questions will be important, so I'll take third questions first and then we will go to the fourth one. Question number 3. Question number 3 is saying what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings. Tick the correct answers. So I'll given you its answer will be your hydrogen gas and iron chloride is produced. Your first is the answer. So hydrochloric acid when added to iron fillings. So your A is the answer. I'll given you A is your hydrogen gas and iron chloride is produced. Hydrogen gas and
iron chloride is produced. Produced. So this is answer of this question. Now we will shift to question number 4, which is a very important one. The question is saying you have what is the balanced chemical equation. Second part of this question is why should chemical reaction be balanced. Now I'll tell you why what is balanced chemical equation. Now in this case your answer is your balanced chemical equation is an equation in which you would find some sort of a like all of the elements, your left hand side, which is your same number of on the right hand side. So your first part of this definition is a balanced chemical equation is one who contains equal number of atoms of each of the elements on the both of the sides. So we will write down its definition so that you can very well understand. Now question number 4 I'll take, and question number 4's answer is question number 4 answer is a balanced chemical equation is one which contains equal number of atoms of each element on the both the sides, बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, एक एग्जांपल भी मैंने उस समय दिया था जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था. उस समय मैंने बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी एक रासायनिक समीकरण जो कि एक बैलेंस रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी वो समीकरण है जिसमें दोनों तरफ के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स उनमें हो, यानी दोनों तरफ जो है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आप जज करें. मैं कई बार आपको जब भी इक्वेशंस लिखता हूँ तो उस समय भी बताता हूँ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के एटम के बराबर हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था आयरन ऑक्साइड का, और आयरन के ऑक्साइड्स एग्जांपल देकर के आपको समझाया था. अब दूसरा प्रश्न ये कहता है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करनी चाहिए. बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि नंबर 1 पार्ट इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू, आई राइट डाउन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें इसलिए बैलेंस करनी होती है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ, आई राइट डाउन, टोटल number of mass of reactants is equal to the total number of mass of product.
यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि क्या नाम, आप किसी तराजू के अंदर अगर 1 किलो शुगर अगर आप तोलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो है उसके वेट को रखते हैं 1 किलो को, और दूसरी साइड में आप शुगर को रखते हैं, और शुगर को रखने के बाद जो है आप दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है कि टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो इसीलिए जो है हमें नंबर 1 पार्ट इसका ये है कि हमें क्यों बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी चाहिए। सेकेंड पार्ट में हमने ये बताया है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम्स present, the number of atoms present of various kind in the reactant part, is equal to the number of, I'll write down the number of atoms, the number of atoms present of various kind in the reactant part is equal to the number of atoms in the product part, यानी दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो हमारे रिएक्टेंट साइड में है, उतने ही नंबर ऑफ अगर आपके एटम्स आपके प्रोडक्ट पार्ट में है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण हमें प्राप्त होगी। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, जो आपके यानी रिएक्शन कर रहे हैं एलिमेंट्स, उनका जो मास है वो आपका बराबर हो प्रोडक्ट के मास के, और दूसरी बात कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आपके जो यानी रिएक्टेंट पार्ट में है, यानी जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हो ऑन द प्रोडक्ट पार्ट पे। तभी आप कह सकते हो कि एक रासायनिक समीकरण जो है एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहेगी, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ये दोनों ही एग्जांपल्स जो है मैंने आपको जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको जब मैं एक्सरसाइज करा रहा था उस समय मैंने आपको समझाए। और अगर सपोज आपको किसी को भी कोई किसी टाइप की दिक्कत हो तो वो वापस मेरी पुरानी वीडियोस में देख लें, उनको इस बात का क्लियरिटी हो जाएगी। तो नाउ वी विल, आफ्टर द फोर्थ क्वेश्चन, वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर in this exercise, question number 5. Now we will take the question number 5 to be on the blackboard. So see the question number 5. We will continue with the part of 5